Hello friends, welcome back to my channel, and today you all know what we do. Today we will be going to do the words for the week that we already did in our previous week also. So we will be going to do every Sunday this concept, that is words for the week. This is not a concept, but this is the topic that I will be telling you some new words with meaning and pronunciation, so that you will be knowing these new words and you will be going to use that in your daily basis sentences or in your exam, also in your speaking skills. So in this video your pronunciation skills, vocabulary skills, speaking skills, every skills will be used. So let's move on to the first word, that is vengeance. Now you will be asking me that यहाँ पे तो लिखा है कि ये तो vengeance बोल सकते हैं हम इसको we can pronounce it as vengeance, but no, we have to pronounce it as vengeance. Ven and geance, we will not be going to pronounce it as vengeance. We will be pronouncing this word vengeance. Okay, let me write here let me write this big ven and geance. So we will be pronouncing it as vengeance, not vengeance. So vengeance means simply revenge. Now I think you all know what is revenge. Revenge is simply the thing that you do. Means अगर उसने मेरे साथ लड़ाई की, किसी एक पर्सन ने मेरे साथ लड़ाई की, so I will be also doing fight with him. Okay, so that's revenge. अगर उसने किया तो मैं भी करूँगा, तो मैं अपना रिवेंज ले रहा हूँ. ओके, रिवेंज मीन्स किसी से अपना बदला लेना या किसी को पनिश करना, और या उसने पहले आपको कर रखा है और फिर आप उसको बदला ले रहे हो कि तूने मेरे को मारा था, अब मैं तेरे को मारूंगा. सो दिस इज सिंपली रिवेंज, विच द प्रोनाउंसिएशन इज वेंजेंस. मीन्स आई हैव टोल्ड यू न्यू वर्ड फॉर रिवेंज, दैट इज वेंजेंस. सो you can take example, that is I have 2-3 examples, like very small example, that I want vengeance. मुझे revenge चाहिए. I want vengeance. Okay, so this is the word and I have made one sentence that is very small. So I want vengeance, not revenge. I want vengeance. So vengeance. Let's take one more example to satisfy this only. So you can take example that I have no plans for vengeance. मेरे पास कोई प्लान नहीं है रिवेंज करने का. और I pushed the car with a vengeance. मतलब मैंने कार को ऐसे पुश किया जैसे मैं एक रिवेंज ले रहा हूँ. So I pushed the car with a vengeance. Okay, उस फीलिंग को लेकर, उस रिवेंज की फीलिंग को लेकर मैंने पुश की वो कार. I pushed the car with a vengeance. Okay, vengeance. So I think you all understand what's the meaning of vengeance and uses of vengeance in sentences. Or you can take one more example, that is I have no plans for vengeance. मेरे पास कोई प्लान नहीं है रिवेंज लेने का. And you can also take example that it began to rain again with vengeance. दोबारा बारिश होने लगी जैसे वो हमसे रिवेंज ले रही है. It began to rain again with a vengeance. So I hope you understand this first word, and let's move on to the second word, that is extol. So let's write
that is extol. Here the meaning of extol is, we pronounce it as extol. Okay, extol. So the meaning is to praise something or someone very much. किसी चीज को बहुत ज़्यादा प्रेज करना, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना. और इन हिंदी इफ यू हैव स्टडीड दैट अतिशयोक्ति अलंकार, सो दैट्स द मीनिंग, टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच. सो टू प्रेज, let me write this clearly, to praise someone or something very much, बहुत ज़्यादा किसी को प्रेज करना, that's the meaning of extol. Extol. So let's take example, किसी की तारीफ करना बहुत ज़्यादा, that's called extol. So let's take example, that is, shallow people always extol beauty more than they do character. This can be one example. Like shallow people. Shallow people. Now what are shallow people? Who are shallow people? Shallow people are those जिनको पैसे, मनी, जिनको मनी से प्यार होता है, and they don't like characters and something like in human beings, their kindness, their qualities they didn't like. They like their money, their fame, their looks. So shallow people are those people. Shallow people, now let's take example of this only. Shallow people always extol. Always extol मतलब हमेशा जो है वो तारीफ करते रहते हैं. एक्सटोल ब्यूटी, ब्यूटी की तारीफ कर, मतलब ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी. मोर देन दे डू कैरेक्टर, मोर देन दे डू कैरेक्टर, कैरेक्टर से ज़्यादा. अब मुझे बताओ, किसी का कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी लुक से. बाई चांस उसकी लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बट दिल से और उसका कैरेक्टर जो है बहुत गंदा होगा, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट कैरेक्टर. मीन्स ब्यूटी सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट दीज शैलो पीपल, दे लुक अपॉन ब्यूटी, लुक्स, मनी, फेम, एंड दे डू नॉट लुक अपॉन कैरेक्टर. सो एक्सटोल मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेज करना. तो शैलो पीपल जो है ब्यूटी को ज़्यादा प्रेज करते हैं कैरेक्टर से ज़्यादा. ओके, ऑलवेज एक्सटोल, हमेशा प्रेज करता है ब्यूटी को, मोर देन कैरेक्टर से, कैरेक्टर से ज़्यादा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड वर्ड ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड. द थर्ड वर्ड इज सिमिलरली simply fox. Third, that is fox. Now we don't pronounce it as fox. Fox is wrong. Okay, fox is wrong. We pronounce it as fox. Fox means you can say this word. We pronounce it as this way, not fox. So here this is just a pronunciation that we didn't pronounce it as fox. You all know what is this meaning of fox. Fox means this is an animal. Okay, but here this fox has a entirely different meaning, and we pronounce it as fox. Means something like this. Fox, not fox. Fox. Okay, so the pronunciation is fox. So let's move on to the meaning. The meaning of fox is not real. Okay, not real, but made to look or seem real. Okay, means the one who is not real but they seem to be. They pretend that they are real. They are doing real thing, but made to look. Let me write this clearly. But made to look or seem real. Means simply they are, folks are those people
who are not real but they pretend that they are real and whatever they are doing is real and they don't have any fake feelings or they don't have any fake feelings. So folks का मतलब simply होता है जो कि not real हो. Okay, so let's take example of this. Means the person who is not real, who is not genuine, who is simply a flatterer or not a genuine person, not a real person. He always pretend that he is real but he is not real. He is expressing his fake feelings. Okay, so for you can take example that the chairs were covered with fox animal skin. Okay, the chairs were covered in fox animal skin. Fox animal skin. The chairs were covered in fox animal skin. जो chairs हैं वो जो हैं fox animal skin, मतलब the skin of animal that is not real. अब आपको पता होगा कि लोग जो हैं वो they hunt animals and then they used to do वो जो क्या करते हैं, जैसे वो you have seen that कि अगर काफ़ी एनिमल्स के ऑयल्स बनते हैं, लेदर्स बनते हैं. सो सिमिलरली जो स्किन होती है एनिमल्स की, उनसे जो है द चेयर वर कवर्ड, चेयर को उन एनिमल की कवरिंग्स, उन एनिमल की स्किन से कवर किया गया था. बट दैट इज नॉट रियल. मीन्स फॉक्स इज यूज्ड, मीन्स दैट skin of animal is not real, they are artificial. Okay, but some rich people or some people used to use that animal skin to show off also, and there are many things why they use that. अपने घर को अच्छे बनाने के लिए, दिखने के लिए कि हमने देखो ये किया है, ये लेकर आए हैं. सो सिंपली अ शो ऑफ. सो हेयर एनिमल स्किन्स को वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितनी एनिमल स्किन्स को बाय करेंगे उतने ही एनिमल्स और मरेंगे. many people will hunt animals and then they will make they will जहाँ पे भी करेंगे वो फूंक देंगे एनिमल्स को, और जो चीज़ उस एनिमल्स में यूजफुल है उसको, जैसे एनिमल्स के ट्रंक को भी रखते हैं आई गेस. सो दैट इज ऑल्सो, एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिससे वेल आई गेस ऑयल वगैरह भी मिलता है एनिमल्स का. सो वी डोंट हैव टू बाय दैट ऑल्सो बिकॉज वी आर बाइंग दैट, एंड दैट्स वाई मोर एनिमल्स आर being dead. They are killing by someone. So this is just a suggestion that if anyone uses this animal skin materials, the materials for decorating their homes with animal skins, natural animal skins, if it is an artificial then it's okay. But अगर original है, और ओरिजिनल महंगी भी बहुत होती हैं, अगर ओरिजिनल है then they should not use that. They should understand that animals are being killed for this purpose. So let's move on to this topic, third point, that is fox. Fox means जो real नहीं है और जो है वो pretend करते हैं that they are real. बट यहाँ पे भी जो चेयर्स हैं वो कवर्ड है एनिमल्स की स्किन से, बट दे आर नॉट रियल. वो फॉक्स हैं, दे आर नॉट रियल, बट लगती हैं कि वो रियल है. ओके, दे सीम टू बी, दे प्रिटेंड टू बी दैट दे आर ऑफ नेचुरल एनिमल स्किन, बट दे आर नॉट. सो चेयर्स आर कवर्ड विद फोक्स एनिमल स्किन. फोक्स, द प्रोनाउंसिएशन इज फोक्स. ओके, और you can take one more example, that is they tend to have a fox friendliness to them. They tend to have a fox friendliness to them. मतलब जो friend बने होते हैं but they are not friendly, they are not real friends, like flattering foes. So
they tend to have a folks friendliness to them. Okay, nakli, not real. So folks, I guess folks is also clear to you how and when we use this folks and what's the meaning. And I have told you sentence also, 2 sentences, one I haven't written and one I have written, and you can note down. I have already told you in my previous video of this also that you should make one separate notebook to note down these all words. Okay, I have also made one separate notebooks. This is a very important topic, or this is not topic, this is a general sense, means हमें पता होने चाहिए कुछ नए words so that we can use in our daily basis, or we can use to impress. अगर कोई interview में भी जाता है तो if you will not use that boring words again and again, you can use some more interesting words, but उनका मतलब सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ अगर आप फोक्स का मतलब बता रहे हैं इंटरव्यू में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 4th पॉइंट, दैट इज pugnacious. Let me write that first. So the 4th word is pugnacious. Pugnacious. Now what's the meaning of this pugnacious? The meaning is very simple, that is ready to argue or fight very forcefully and aggressively. मतलब जो pugnacious, the person who is pugnacious, we pronounce it as pugnacious, okay, not pugnacious or pugnacious. We pronounce it as pugnacious. Pug and बाकी जो है word that is same, that is nacious. So pug is separate and nacious is separate. So this is the correct pronunciation, that is pugnacious. So here in this simply this meaning that कोई जो person है वो ready होता है, कभी भी उसको बोल दो आर्ग्यू करने के लिए, फाइट करने के लिए, किसी से भी बहुत जोर से करेगा, arrogantly करेगा, aggressively करेगा, that person is known as pugnacious. Okay, ready to argue, or fight very forcefully, and aggressively. Okay, forcefully, aggressively. So this is the meaning of this particular word pugnacious. So we can take example, that is I found him pugnacious. Let's write example, that I found him pugnacious. Let me write that clearly. I am writing again, that is I found him pugnacious. That is pugnacious, and this is S, and arrogant. I hope you understand this last word arrogant. It is written arrogant. Okay, it is not clearly visible, I guess. So here the meaning is also satisfying this word, that is pugnacious. Pugnacious simply mean जो कि ready to argue or fight, कभी भी argue करने के लिए ready, fight करने के लिए ready, with forcefully and aggressively. Okay, so I have made one very simple example of this pugnacious word, that is I found him pugnacious and arrogant. Okay, pugnacious and arrogant मीन्स मैंने उस व्यक्ति को जो कि हर बार कभी भी फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए बहुत ज़ोर से अग्रेसिवली पाया है, एंड एरोगेंट. ओके, आई फाउंड हिम पग्नेशियस एंड एरोगेंट.
Okay, so I guess this is also clear to you what's the meaning of pugnacious and what's the use of this meaning and example I have already told you. We can take one more example also. I'm not writing, I'm just speaking. That is, the professor had been pugnacious and irritable. जो प्रोफेसर है वो आर्ग्यू करने के लिए कभी भी रेडी हो जाता है एंड ही इज़ वेरी irritating person. In this according to this sentence, the professor had been pugnacious and irritable. The professor had been pugnacious and irritable. This sentences will also come under this word pugnacious. So I guess this is also clear to you. Now move on to the fifth word, that is soliloquize. Okay. So fifth word is soliloquize. Soliloquize. The spelling that I am pronouncing, you have to understand, you have to listen that also very carefully. Means simply the pronunciation of this particular word is soliloquize. Solilo, that is similarly this. Solilo and quize. Quize means quize. We have stretched this word quize. So soliloquize is the pronunciation of this fifth word, and that's mean talk to oneself. जो अपने से बात करता है, talk to oneself. Talk to oneself. Okay, so let's take example. I think this I should not be. This I can tell you what's this meaning. I have already told you, I guess, in the when I am writing this word only. That is talk to oneself. जो अपने से ही बात करता है, and he is very shy person type. So talk to oneself. So let's take example. That is, I was beginning to soliloquize when a rude voice beside me interrupted. मैं जो है वो अपने से मतलब कुछ करना भी हो तो हम अपने से बात कर लेते हैं कभी कभार. So when I have written example. Let me write that first. I was beginning to soliloquize. Beginning to soliloquize. Okay. When a rude voice. In my previous video, I have told you the word that is related to rude. Boorish. Boorish is that word. When a rude voice beside me interrupted. Beside me interrupted. So here I guess this is all. This is clearly visible to you. Interrupted. So I was beginning to soliloquize. मतलब टॉक टू वनसेल्फ, जो अपने से ही बात करता है. सो मैं जो वो अपने से भी बात करने ही लगी थी. आई वॉज बिगनिंग करने ही लगी थी. बट तभी जो मेरे साथ एक रूडली आवाज ने मेरे को इंटरप्ट कर दिया. मतलब जो भी पर्सन मेरे साथ था, बिसाइड मीन्स साइड में, मतलब साथ में, एंड बिहाइंड मीन्स पीछे. preposition, this is a preposition. beside means साथ में and behind means पीछे. so जैसे ही मैं soliloquize करने लगी, talk to oneself, जैसे ही मैं बात करने लगी या कुछ सोचने लगी जो अपने दिमाग में हो, so I was beginning to soliloquize when a rude voice beside me interrupted. जो मेरे साथ कोई पर्सन है वो रूडली, अचानक ही रूडली बोलने लग गया किसी से भी, और मेरे से आई डोंट नो किसी से भी रूडली वॉइस बात करने लग गया. एंड then my mind get disturbed and I forgot what to talk to myself, and that's the meaning of this word soliloquize. means talk to oneself. पर जैसे ही मैं बात करने लगी वैसे ही किसी ब्रूडली वॉइस ने मेरे साथ जो है वो मेरे को इंटरप्ट कर दिया. फिर मैं बोल ही नहीं पाई वो अपने आप से बात, वो कर ही नहीं पाई. I am not able to talk to oneself. okay. so soliloquize में ये एक पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग ए सेंटेंस नहीं है. वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस. soliloquize होता है talk to oneself. He is a
सोलिलोक्वाइज, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि ये एक सोलिलोक्वाइज है. ये एक पर्सन है जो कि टॉक टू वन सेल्फ, जो अपने से बात करता है, टॉक टू वन सेल्फ. एंड इन दिस वर्ल्ड एवरीवन टॉक themselves, talk with themselves. Okay, so this is not a very weird thing. This can be weird thing for someone, but this is very common now. So soliloquize, talk to oneself. I was beginning to soliloquize. अगर हमें कुछ शेड्यूल ही बनाना है अपने मन में कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, बट अचानक ही कोई रूडली वॉइस आ जाएगी तो हम तो रुक जाएंगे ना उसको शेड्यूल करते करते. सो दैट्स the sentence meaning, and soliloquize, I thought you understand this, talk to oneself. So let's move on to the sixth word, that is pleonasm. Okay, pleonasm. So sixth word is pleonasm. Pleonasm. So the meaning of pleonasm, the word pleonasm means using more words than necessary. मतलब बात करनी है इतनी सी, बट हम उसे इतना इलेबोरेट कर देंगे, इतना खींच देंगे, मीन्स यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. ओके, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ प्लियोनेज्म. सो द मीनिंग आई एम राइटिंग दैट इज यूजिंग मोर वर्ड्स, यूजिंग मोर words than necessary, more words than necessary means we are using words that are unnecessary words. We are using the words that are not required in that particular topic or point. We are using that also, means using more words than necessary. अब हम अगर इतना सा सेंटेंस बोलेंगे और उसी को हम किसी और वे में भी बोलेंगे, सेम सेंटेंस को, देन दैट विल बी प्लियोनेज्म. लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट इज वेरी सिंपल. दैट इज आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स. आई हर्ड इट विद माई own ears. So here, what's the pleonasm? First, read this sentence carefully and find the meaning in your mind. So, I heard it with my own ears. मैंने अपने खुद के कानों से सुना. So, जब तुमने सुना, I heard. जब तुमने सुना, I heard, मैंने सुना. I'm telling you, I'm teaching you, so I'm pointing out you. So let's take it with me only. That is, I heard it. मैंने खुद सुना अपने कानों से, with my own ears. मतलब जब मैंने सुना तो मैंने अपने ही कानों से सुना होगा, किसी और के कानों से तो सुना होगा नहीं. I heard it with my own ears. Means heard. This word heard is necessary. ये जो है वो word sufficient है. We have written this word with my own ears. That is a pleonasm. That is a pleonasm. Okay, with my own ears. जब मैंने सुना तो मेरे को पता है कि मैंने अपने कानों से सुना, किसी और जगह तो मैं सुन नहीं सकती. So I heard it means मैंने सुना, बट फिर मैंने इसको और इलेबोरेट कर दिया और स्ट्रेच आउट कर दिया और मैं इसे ढंग से बताने लगी. दैट इज इट विद माई ओन ईयर्स, मेरे खुद के कानों से. सो हमें पता है कि सबके कान होते हैं, ओके, सुनने के लिए. सम आर हैंडीकैप्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. दैट इज आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स. जब मैंने हर्ड यूज कर दिया, देन हर्ड इज सफिशिएंट. बट फिर मैंने ये भी लिख दिया विद माई ओन ईयर्स, मीन्स यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. दिस इज नेसेसरी, बट और वर्ड्स यूज कर लिए, दैट इज अननेसेसरी. दैट्स कॉल्ड प्लियोनेज्म. मीन्स द वर्ड्स दैट स्टार्टिंग with and ends with ears. Here in this particular sentence, ऐसे नहीं कि जो भी words with और ears एंड होते हैं दैट इज प्लियोनेज्म. नो,
यहाँ पे दिस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये वर्ड विद से स्टार्ट हुआ एंड ईयर से हुआ, सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्लियोनेज्म है. ओके, प्लियोनेज्म, द प्रोनाउंसिएशन इज प्लियोनेज्म, प्लियोनेज्म. ओके, so I hope you understand this point also, this word also, that using more words than necessary. I have told you this example also, I heard it with my own ears. So let's do last word, that is, so this is the 7th word and this is the last word for the week, as the week consists of only 7 days. So this is pronounced as taciturn. Okay, taciturn, not taciturn or taciturn. We pronounce it as taciturn, taciturn, taciturn. Okay, taciturn. Look, this ta, sa and turn. So this is the pronunciation, taciturn. Okay, taciturn. So this is the pronunciation of taciturn word, that is taciturn is the correct, incorrect pronunciation. The correct pronunciation is taciturn, taciturn, taciturn. Okay, taciturn, taciturn, taciturn. Okay, so I hope you understand this pronunciation, and let's move on to the meaning of this word. This word meaning is very simple, and that is someone who is reserved and untalkative. Means someone who is untalkative and the one who don't talk very much. Okay, someone who is untalkative and reserved. You can write reserve, otherwise there is no need for reserve also, but still you can write. So the example is taciturn. Taciturn means someone who is untalkative and reserved, जो ज़्यादा बात नहीं करता, and that is reserved means a shy person, shy, timid, untalkative. Okay, the one who is not very much talkative. So you can write, this is the example, by nature, let me write this nature correctly, by nature, and you can write any word, that is by nature. Rohan is a taciturn. Okay, Rohan is a taciturn. So let's take example of a girl, that is, or a woman, that is Sheila. We can take any example. You can write Rohan also, you can write Sheila also, you can write Shilpa also, you can write any word. By nature, Sheila is a taciturn, Okay, Sheila is a taciturn. I think this is not clearly visible. So taciturn. By nature, Sheila is a taciturn woman. She is a woman. We have characterized her as a woman. So by nature, Sheila is a taciturn woman who keeps her thought to herself. Who keeps her thoughts to herself. Thoughts to herself. So this is the example of this particular word, the word taciturn. Taciturn. I have told you this pronunciation. Taciturn means someone who is untalkative and reserved. So I have written example, by nature, मतलब उसका nature ऐसा, by nature Sheila is a taciturn woman. और अगर ये हम girl को characterize करते, then we can write Sheila is a taciturn girl who keeps her thoughts to herself. और अगर हम रोहन लिखते हैं तो रोहन is a taciturn man or boy who keeps her
his आएगा यहाँ पे हर की जगह. अगर we are using a name that is of male, means a male like a boy or a man, so वहाँ पे हम him use करेंगे. keep him, okay. keep sorry her नहीं, his, okay, his. अगर हम यहाँ पे man की बात करते then we will be using his here. By nature Rohan is a taciturn boy who keeps his thoughts to himself. यहाँ पे his आता और यहाँ पे him आता, himself. ओके, अगर हम boy लिखते then और man लिखते then. So by nature Sheila is a taciturn woman who keeps her thoughts to herself. And by nature Rohan is a taciturn boy who keeps his thoughts to himself. Okay, so this is the example of this word, that is taciturn. कि वो nature ही शीला का ऐसा है कि वो अपने thoughts को, अपनी चीज़ों को अपने साथ ही रखती है, ज़्यादा बात नहीं करती. She is not talkative. She keeps her thoughts to herself only. और she can be using she can be telling that thoughts to someone that is very close to her, or mainly one or two persons or her family members. She is telling that thoughts to them also, but here main focus is on Sheila. So by nature Sheila is a taciturn woman who keeps her thoughts to herself. बट ये भी तो हो सकता है वो अपने थॉट्स किसी कुछ लोगों को बताती होगी, ज़्यादा नहीं. अनटॉकेटिव क्या होता है, जो ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादा बात ना करे. थोड़ी बहुत तो बात सारे करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं होता जो बहुत कम बात करता है. आई एम अ taciturn, I guess. I used to talk very less. Okay, I'm talking about myself now. So by nature Sheila is a taciturn woman who keeps her thoughts to herself. His अगर हम boy लगाएंगे यहाँ पे, and him अगर हम boy लगाएंगे तो यहाँ पे him आ जाएगा इस particular sentence में. Okay, so I hope you understand these all 7 words. That is very simple and you can use these words in your daily basis sentences. अगर कोई आपको चुपचाप दिखने वाला कोई बच्चा मिले, या फिर बॉय मिले, गर्ल मिले, वुमन मिले, मैन मिले, anybody, any human, so you can use this word taciturn. Means taciturn, she is taciturn, वो जो बहुत कम बात करती है and अपने तक ही रहती है, that is taciturn. अगर तुम्हें ज़्यादा ही मतलब एक जो पर्सन है वो बहुत एक ही बात को काफ़ी सेंटेंसेस, काफ़ी चीज़ों में बताया जा रहा है, दैट कैन बी यूज्ड एज प्लियोनेज्म एंड सोलोक्वाइज, जो अपने से बात करता रहता है. इफ़ यू हैव सीन एनीबडी हु इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ ओनली, सो यू कैन यूज दैट वर्ड सोलिलोक्वाइज. सो दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर डेली बेसिस. एंड पग्नेशियस मीन्स जो भी जल्दी से आर्ग्यू करने के लिए, बहुत उसका शॉर्ट टेम्पर होता है, so pugnacious can be used for that person also. And third, that is folks. So folks is a person that is not real, or that seems that pretends to be real. He pretends to be real, that person pretends to be real but he is not real. So अगर आपको कोई ऐसा person मिले जो आपसे तो ठीक से बात कर रहा है बट वो रियल नहीं है, असलियत में वो आपसे फ्रेंडली होकर बात कर रहा है बट असली में वो आपका फ्रेंड नहीं है. ही इज अ एनिमी ऑफ योर, मीन्स फ्रेनेमी. ओके, सो fox is also clear to you words, that is folks. Okay, folks, not fox, that is folks. So folks is also clear to you. And second word is extol, जो अतिशयोक्ति अलंकार, that I have told you, मतलब एक ही चीज़ को मतलब बहुत प्रेज करना, बहुत उसको ब्यूटीफाई करना. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था शैलो पीपल का, जो कि कैरेक्टर को ना देखकर ब्यूटी को ज़्यादा एक्सटोल, प्रेज करते हैं. सो एंड फर्स्ट वन इज वेंजेंस, दैट इज रिवेंज लेना, किसी से बदला लेना. सो दीज ऑल वर्ड्स दैट आई हैव टोल्ड यू टुडे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स. So if you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos.